Let's read the second stanza of the poem. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning, the smell of shuli flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple, laments comes to me as the scent of my mother. The poet loves her mother even after her death. He feels her presence in the smell of holy flowers she used in the morning prayer. Here, Shivli flowers mean the flowers that the people of Hindu community use to decorate their gods. शायर कहता है कि वो अपनी मां को याद करने से कासिर है, लेकिन खिजां के मौसम में जब फ्लावर्स की खुशबू उसके करीब आती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि ये खुशबू उन्हीं फ्लावर्स की है जो उसकी मां मंदिर जाकर इस्तेमाल करती थी. Let's read the third stanza of the poem. I cannot remember my mother. Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. There are some more new words. Distant means very far or far away. Stillness means silence, or we can say that a state of no motion or movement. उर्दू में हम इसे सुकूत कहते हैं. गेज मीन्स शौक से देखना, a long fixed look, or we can say that to look at something for a long time. In this stanza, the poet says that during nights, he looks at the sky through his bedroom window. He feels her presence everywhere. He thinks that his mother looks at him from the heaven. इस आखिरी बंद में, आखिरी स्टेंजा में शायर एक दफा फिर कहता है कि वो अपनी मां को याद नहीं कर सकता है क्योंकि उसने अपनी मां को नहीं देखा है. वो एक छोटा बच्चा था जब उसने अपनी मां को खो दिया है. लेकिन रातों के दौरान शायर अक्सर अपनी खिड़की से आसमान की तरफ देखता है. शायर को महसूस होता है कि उसकी मां आसमान में मौजूद है और वो हर तरफ फैली हुई है और उसकी मां उसको देख रही है. In this poem, the poet Rabindranath Tagore has used the poetic device of imagery. Imagery means to use figurative language to represent objects, actions or ideas. इसका मतलब है कि शायर अपनी शायरी को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारी आंखों के सामने किसी चीज या किसी ख्याल की तस्वीर बनती है. हम सिंपली कह सकते हैं कि इसका मतलब है तस्वीर कशी करना. Imagery has 5 main types. First one is visual. ये हमारे विजन रिलेटेड है कि हम कोई चीज जब देखते हैं, जब हम कोई लाइन पढ़ते हैं या कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक तस्वीर जैसी बनती है, उसको हम कहते हैं विजुअल. ऑडिटरी मीन्स साउंड, आवाज बनती है किसी चीज की. ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल, जब कोई लफ्ज या कुछ वर्ड्स
پڑھنے سے ہمارے ذہن میں یا ہمیں کسی چیز کی جیسی خوشبو آتی ہے یا بو آتی ہے کسی چیز کی تو اسے ہم کہتے ہیں olfactory. Tactile means taste and kinesthetic means touch. اس نظم میں شاعر نے امیجری کا استعمال کیا ہے. There are several examples in the poem that the poet Rabindranath Tagore has used the poetic device of imagery. In the first stanza, the poet says playthings. تو ہمارے ذہن میں ان کھلونوں کی ایک تصویر بنتی ہے. آج بھی ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے ان کھلونوں کی تصویر جیسی بنتی ہے. ٹیون از another example. تو جب ٹیون لفظ ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے کسی چیز کی, کسی آواز کی. اٹس auditory imagery. اور some song جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر جیسی بنتی ہے سانگ کی. سانگ کیسا ہوتا ہے تو بالکل ذہن میں آ جاتی ہے یہ بات. There are some more examples of imagery that the poet has used in the poem. For example, autumn morning تو ہمیں خزاں کی صبح یاد آتی ہے. اور smell of showy flowers اس سے بھی ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے. This kind of imagery is called olfactory. Scent of my mother یہ بھی olfactory imagery ہے. And distant sky is visual imagery.